गुजरात के वडोदरा जिला के करजण की स्कूल में चलती क्लास में छात्रा पर छत का स्लैब गिर जाने से छात्रा घायल हो गई। करजण केलवनी मंडल संचालित एनबी शाह सार्वजनिक हाई स्कूल के प्राथमिक विभाग में 13 नंबर के कमरे में एक दुर्घटना घटी, जिसमें चलती क्लास के दौरान छत से सीमेंट की पपड़ी उखड़ जाने से छात्रा को चोट आई। यह स्कूल सालों पुरानी और खस्ता हाल स्थिति में है, जहां बालवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई करते हैं। प्राथमिक विभाग में 984 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्ष की दामिनी को चोट पहुंचने से अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया। घायल छात्रा के पिता करजन में चाय का ठेला चलाते हैं और अपनी बच्ची को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए असमर्थ हैं। ऐसे में सरकारी खस्ताहाल स्कूल में पढ़ाने के लिए वे मजबूर हैं। यह स्कूल पिछले 7 वर्षों से खस्ता हाल है और 2 बार स्कूल की मरम्मत भी हो चुकी है। उसके बावजूद घटी यह घटना छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। गत रोज शाळाना ત્રીજા માળે ધોરણ 7 નો વર્ગનો છૂટવાનો સમય હતો। બરાબર 11:55 વાગે શાળામાં કોર્નર પર એક નાનો પોપડો પડેલો, જે ક્લાસમાંથી વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળતા હતા તે સમયે જ આ ઘટના બનેલી છે। તેમાં એક વિદ્યાર્થીની જે નાની માઇનોર ઈજા થયેલી તેને અમે તરત જડિયા હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા અને તેને ડૉક્ટરે બિલકુલ સ્વસ્થ જાહેર કરેલ છે। એના વાલી સાથે પણ આજે ફોનિક વાત પર એનું ફોલોઅપ લીધેલું છે અને વિદ્યાર્થીની બિલકુલ સરસ છે। ઉપરથી ડીઓ ઓફિસમાંથી પણ અમારી પર તપાસના આદેશ હતા, એમની તપાસ પણ આજ રોજ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે અને શાળાનું સમારકામ તરત જ અમારા ટ્રસ્ટી સાહેબને વિનંતી કરતા એમણે તરત જ સમારકામ કાલે ને કાલે ચાલુ કરાવી દીધું છે। અત્યારે પણ શાળાનું સમારકામ ચાલુ છે।